गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। प्रणाम, जय हिंद एंड वणक्कम। और सबसे पहले हैप्पी दीपावली टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस शो ऑन दीपावली इवनिंग। बहुत शोर शराबा हो रहा है, फिर भी हम बात करते जाएंगे क्योंकि दिस इज लाइक यू नो हैविंग अ डिस्कशन इन बैटल टू सम एक्सटेंट, राइट? Today the topic is update on rejecting China, and of course, इसके बाद we'll have an open house question and answer session. Why did I choose this rejecting China का कहानी? बहुत लोग ये सोचते हैं कि चाइना के सामने हम झुक जाते हैं। चाइना जब कुछ करता है तो हमें पीछे हटना पड़ता है। और चाइना का बोलबाला इतना है कि सब बोलते हैं कि सर वो कब अटैक करेगा, हमें कैसे अटैक करेगा, वगैरह वगैरह। सो दैट इज व्हाई आई थॉट कि टुडे दीपावली के अवसर पर, नरक चतुर्दशी के अवसर पर, आफ्टर ऑल नरक चतुर्दशी क्या होता है? किलिंग ऑफ इविल। So let's talk of China, which is actually, the way I look at it, it's evil for us. तो इसीलिए ये टॉपिक चुना। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमने क्या-क्या किया है चाइना के साथ। और हमने बहुत कुछ किया है चाइना के अगेंस्ट, जो बाकी देश आज तक कर नहीं पाए, और इसीलिए ये टॉपिक चुना। और मोटे-मोटे तौर पर फॉर्च्यून इंडिया में ये एक आर्टिकल निकला था, रिजेक्टिंग चाइना। उसको पढ़ा था मैंने, उसमें काफ़ी डिटेल्स थे। मैंने तो सोचा कुछ शेयर करूँ आपके साथ, और फिर मैं जोड़ के हम बात करेंगे। ओके, व्हेन डिड दिस प्रॉब्लम स्टार्ट? When did we start rejecting China? We have to understand that in the correct context. We first started rejecting China uh, actually at the onset of COVID. 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, बहुत जगह में बहुत शेयर प्राइसेस गिर गए थे। उस वक्त चाइना के पास काफी पैसा था, उन्होंने जाके वो शेयर्स खरीद लिया, और उन कंपनीज में ये शेयर होल्डर, मेजर शेयर होल्डर धीरे धीरे बन गए, और उन कंपनीज को कंट्रोल करना शुरू किया। हमारे यहाँ भी जिस दिन ये लॉकडाउन वगैरह शुरू हुआ 2019 में, एक मूव आया था जहां Chinese firms started buying up shares in HDFC because all the shares had gone down, and HDFC is a blue chip company, उसका शेयर्स खरीदना शुरू कर दिया। और हमें पता चला तो immediately India amended its FDI policy, and it amended, put in rules so that HDFC shares could not be acquired by Chinese companies, and China could not take over HDFC. We also amended our FDI so that, and we imposed a blanket ban on investments through automatic route by entities from countries that share border with our India. जिस देश का हमारे साथ बॉर्डर था, उनको हमने बोल दिया आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, वो क्लियरेंस हमसे लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। उससे क्या है, चाइना को धक्का मिला है। एक थियरी ये भी है, क्योंकि हमने ये बैन लगाया था, तुरंत 1 महीने के बाद उन्होंने आक्रमण किया ईस्टर्न लद्दाख में। हो सकता है ये भी एक कारण हो, पर हम डटे रहे। ईस्टर्न लद्दाख से तो उनको धकेल दिया वो बाहर वापस, सिर्फ वो देमचौक में बैठे हैं। वो एक दिन वहां से भी धकेल देंगे, वो बात की बात है। बट लेट अस टॉक अबाउट दिस। We must realize India is the only country which has banned 220 Chinese apps, including TikTok and PUBG. अभी तक यूएसए में टिकटॉक का बैन नहीं हुआ है। इंडिया हैज केप्ट Chinese 5G आउट। हुआवी और ZTE को हमने
बैन कर दिया और अभी 5G का टेस्टिंग फेज हो रहा है, उसमें चाइना का कोई कंपनी अंदर नहीं, हमने रिजेक्ट कर दिया। चाइनीज मोबाइल फर्म्स, Xiaomi, Oppo, ZTE, OnePlus, Huawei, Hair, ये सब दे आर ऑल फेसिंग इन्वेस्टिगेशंस इन इंडिया। तहकीकात हो रहा है उनके ऊपर फॉर फ्रॉड, फॉर टैक्स एवेजन, ऑल दैट। और स्मार्टफोन मेकर्स लाइक ओप्पो, वीवो इंडिया, वीवो इंडिया, Xiaomi, ये सब दे हैव डन टैक्स एवेजन एंड इनके ऊपर फाइन्स लगे हैं। दे आर कंटेंडिंग इट इन कोर्ट, बट वो ये बात देखने वाली बात है। और चाइना से देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अस टू लेट देम गो स्कॉट फ्री। अभी तो हमने ये मिडल ईस्ट एयरलाइंस के ऊपर भी हमने ये चालू कर दिया, हु आर ट्राइंग टू फूल अस। ओके, in the automobile sector and EV sector also we have stopped Chinese from coming in. $2 billion का इन्वेस्टमेंट ग्रेट वॉल मोटर्स और BYD ने कोशिश किया यहाँ लाने के लिए। ये सोचा कि यहाँ आके वो अपना कार बेचेंगे, हमने बंद कर दिया। MG मोटर्स, राइट, MG मोटर्स का कार्स यहाँ बिकते हैं, हमने बोल दिया कि भाई आप जब तक इसको पूरा इंडियन नहीं बनाओगे हम लेंगे नहीं। तो वो अभी आजकल इंडियनाइज कर रहे हैं, दे आर जॉइनिंग हैंड्स विद एन इंडियन कंपनी टू कंटिन्यू टू डू बिजनेस इन इंडिया। सो देयर ऑल्सो हमने इनको रोक लगा दिया, राइट। सेमीकंडक्टर्स और सी, हालांकि हम सोचते हैं कि सेमीकंडक्टर्स रेस में चाइना पीछे है, इट इज बिहाइंड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इट कांट मेक sophisticated semiconductors, but what has happened is that they make they they produce semiconductors in bulk, and lot of semiconductors in our industry we buy from there. Now we have started competing because we have, government has a PLI scheme where we're going to make semiconductors. अभी USA माइक्रोन के साथ हमने ये डील किया where with Tata's एक joint venture में semiconductors will be made in India. And then of course Foxconn, right? Also with TMSC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company के साथ मेल मिला के they are also trying to set up a factory in India. So even in the semiconductor space, उनको हमने पीछे धक्के दे रहे हैं, rejecting them. चाइना हमें नहीं चाहिए। ये भी देखिए, ये रॉयल्टी का जो प्रॉब्लम है, ये वीवो वगैरह का वो है, और उसका भी ओप्पो मोबाइल वगैरह का रॉयल्टी का वो बोलते हैं कि भाई रॉयल्टी से वी शुड टेक सो मच मनी आउट। इट इज समथिंग लाइक 5,086 crores, right? There are foreign exchange regulations they have violated. Lot of things they have done. It's only India which has taken such steps कि इनके ऊपर पाबंदी लगा दे। FDI, FDI को हमने रोक दिया। 58 Chinese proposals have been rejected by India since 2020. ये सब सिलसिला 2020 में शुरू हुआ, उनको हमने रोक दिया। और 14 proposals have been put on hold. यही है BYD, ग्रेट वॉल मोटर्स, लक्ष्य, इन सब का हमने रिजेक्ट कर दिया, और एक पर्सन फार्मास्यूटिकल ग्रुप का हमने थोड़ा कम कर दिया। और IT क्रैकडाउन भी हो रहा है, ये चाइनीज इनकम टैक्स का क्रैकडाउन हो रहा है इन चाइनीज फर्म्स के। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो वी आर एक्चुअली वन ऑफ द कंट्रीज विच हैव stopped China from coming into India in a big way after 2020. उनको हम पीछे धकेल। And this point has come out in the Western press maximum. They say that what India has done, no one else has done. And they quote India's example as to how we have actually, put a wall against China. Okay. And then China FDI today is at a 10-year low. आप नीचे देखिए,
कितना कम हो गया चाइना का एफडीआई। अगर आप नजदीक देखेंगे तो यू विल सी, चाइना से एफडीआई आता है थ्रू हांगकांग एंड डायरेक्ट आल्सो। 2023 में इट इज लेस देन $10 million. It's so low. Okay. And through Hong Kong, which has got a little more open market, it's about $78 million. But if you see 2012 से लेकर अभी तक ये सबसे कम उनका उनका एफडीआई है। इनका निवेश यहाँ हो नहीं सकता हमारे मार्केट के अंदर। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इंडिया का मार्केट इतना कम है, चाइना कहीं भी जा सकता है, बट चाइना इज फेसिंग प्रॉब्लम एवरीवेयर। उनके खुद के शेयर्स तो गिर गए हैं, टप हो गए। तो अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे तो वी आर एट द फोरफ्रंट ऑफ सेइंग थैंक यू चाइना। और ये बात ज्यादातर लोग समझते नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस वी आर शोइंग स्ट्रेंथ एंड चाइना रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ, एंड हेंस इट इज अ one part of telling China keep off. We are showing our comprehensive national resistance to China, not only military. So tackling China is not only military, it's also economic and other methods. We'll come to the other methods. What we have done, NewsClick जो है वो इंडियन मीडिया का है। वो एक्चुअली इट इज NewsClick India is part of that media group which is run from New York. वो एक सिंगम करके है, वो चलाता था। और ये दिस इज बेसिकली अ फर्म व्हिच यू नो पुट्स प्रोपेगेंडा, चाइनीज प्रोपेगेंडा। इट्स पार्ट ऑफ चाइनीज इंफॉर्मेशन ऑपरेशन स्टोरी वर्ल्ड वाइड। और इसके अगेंस्ट हमने एक्शन ले लिया क्योंकि इसका जो रेजिडेंट एडिटर है वो अभी जेल में है अभी तक, उसको बाहर नहीं निकलने दिया। और ये इसको हमने वी हैव डिसमेंटल्ड इट। ओके, एंड देन this is the article which came in South China Morning Post. कहता how India's unspoken strategy to drive out Chinese firms can backfire. They talk कि भाई if India does this, it will have problems वगैरह वगैरह वगैरह, but डरते हैं क्योंकि अगर किसी और बाकी देशों ने भी हमारा जो मॉडल कॉपी कर लिया तो चाइना टफ हो जाएगा। और इसीलिए इन साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट हमारे ऊपर आलोचना होता है। दे क्रिटिसाइज अस फॉर हैविंग टेकन सच स्टेप्स, बट सो फार नथिंग हैज हैपेंड। एंड वन डे आई एम वेरी श्योर others will examine our models, and of course they'll take steps the way they want, but ours is the main model which they will follow. Okay, then Russia, because we are dealing with Russia for oil, Russia wanted payment in yuan, we have said no, because Russia and China का गठबंधन ज्यादा हो रहा है। So this is one way of telling Russia we will not come in line with your ideas. तेल हम आपका खरीदेंगे, we'll buy your oil, but not with yuans, not with dollars. It has to be rupee trade or a third. You can take it any other manner, or you barter. सामान ले लीजिए हमसे वापस। So we have said this also to Russia. In a way, you have rejected yuan completely. Okay, and then we are giving them competition. We're giving them competition. That's important. In Rwanda, Africa, Rwanda and many other countries. This is just a क्या बोलता हूँ मैं, एग्जाम्पल आई हैव गिवन, ये दिखा रहा हूँ मैं कि रवांडा और बाकी बहुत कंट्रीज में चाइना इज नाउ बीइंग सीन एज अ प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना, इवन नेपाल हैज गॉन फॉर ओपन टेंडरिंग सिस्टम आज के दिन। दे डोंट वांट टू गिव priority to the Chinese companies. So we have a scope. We will be cheaper. We will be better. We have more trust. We will enter the market. This is one factor which we have to use, trust. क्योंकि लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं. There is something which we don't understand, right?
Okay, then we are giving them competition through Adani ports. Yesterday in the neighborhood thing, I said Adani Port has got uh, stake in Colombo main terminal, and that is being supported by USA. They have given them us $550 million for that, or they've invested in that port. Now we have made a port at Vizinjam. और ये जो विजिंजाम का जो पोर्ट है केरला के नीचे, त्रिवेंद्रम के नीचे, ये मैं काफी दिन से सुन रहा हूँ, काफी दिन से. I've been hearing this almost for the past about 15-20 years. It's now become a reality. With the kind of trade which is happening with India and the kind of linkages we have in India, this is the right thing time कि एक बड़ा पोर्ट आ गया. अगर ये बड़ा पोर्ट आ गया तो लोग यहाँ आएंगे. You can give them better terms, right? So we are also giving them competition, and it is not only here. Like I said, Africa में भी competition दे रहे हैं. So there is a lot of happenings where we are pushing back China. Actually, the talk should have been on pushing back China, but I called it rejected China because वो जो कार्टून पहले जो आया था ना, वो मेरे को अच्छा लगा. वो फॉर्च्यून इंडिया का कार्टून था, मैंने उठा के इधर लगा दिया. That is why I'm going on rejecting China. Okay. Then Foxconn has invested in India and they started making iPhone i14 here. Okay. And soon the sale from India will be more than in China. Okay. दिन दूर नहीं है. And they're putting a factory in near Bombay somewhere, Bombay Pune के बीच में, one factory in Chennai, and they are searching for a third factory. That's what I've heard. Right. And Foxconn output from China will shrink slowly. So यहाँ बढ़ता जाएगा, वहाँ कम होता जाएगा. We don't need to manufacture everything, all manufacturing from China. अब मैं बार बार बताता रहता हूँ. If we can reduce China's manufacturing by about 15 to 20%, China will become a normal country. ये इनका सब कुछ टप हो जाएगा. और वो हो रहा है. ये यकीन मानिए, ये हो रहा है. Right? Okay. उसके अलावा RCEP में we said we will not take part because it was China backed initiative. We said no, we will not open our market to China so that they can flood us. BRI, what did we do in BRI? We said we will not accept any phraseology of sorry, I'm not talking of BRI, I'm talking of Shanghai Cooperation Organization Summit, which हमारा प्रतिनिधित्व था और हमने कंडक्ट किया एज अ वर्चुअल थिंग. वी सेड वी विल नॉट एक्सेप्ट BRI phraseology. They wanted to put उनका जो सिविलाइजेशन इनिशिएटिव है, डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, उनके जो लव्स हैं, उनको वो they wanted to put something about BRI. We said no. We showed the door to them. Then during the BRICS summit, they wanted to progress UN. We said no. They wanted 18 or 19 countries to be form part of BRICS. We said no, only 6 countries were allowed. On those also, which we want, with which we have already strategic partnerships. Then G20 became a success for us despite China. We didn't miss China. China के बावजूद हमने ये उसको सक्सेस कर दिया. और तो और, we conducted G20 events in Srinagar and Arunachal Pradesh. इसीलिए वो चाइनीज नेम्स वगैरह लगाया अरुणाचल प्रदेश में वगैरह. वो करते क्या? और आईमेक हमने शुरू कर दिया. एंड रिमेम्बर, आईमेक इज अ काउंटर टू BRI. बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, सर विल आईमेक गो थ्रू? आईमेक विल गो थ्रू. याद रखिए, 5 साल के बाद हम बात करेंगे इसके बारे में. क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया एंड UAE need it more than India needs it. And India, Saudi Arabia and UAE have already started investing in the food corridor because उनको food चाहिए, हमें energy चाहिए. ये तो शुरू होगा. ये जब इजराइल के साथ प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा,
तब उस साइड बढ़ेंगे। वहां तो छोटा, इट्स ओनली अ स्मॉल पैच, you push some through Jordan and you through to Haifa. वहां से it's by sea. So IMEC will go through. You have to have patience. In fact, I've written an article about IMEC. वो इंडिया फाउंडेशन है जो एक दिल्ली से है। वो इट इज क्वाइट भारतीय फाउंडेशन है। वो भारतीय नजरिया से काफी लिखवाते हैं, मेरे से लिखवाया। वो आर्टिकल मैं अपना इसमें I'll publish it. It's already on my blog. I'll also publish it, in which I have done a detailed analysis of IMEC, why it cannot fail, despite this Israel, uh, Hamas conflict. लिखा मैंने उससे पहले, थोड़ा डिले हो सकता है, बट आएगा जरूर। ओके ओके, द प्रॉब्लम विद अस इज ट्रेड, और ट्रेड डेफिसिट विद चाइना इज इंक्रीजिंग। इसके लिए वी हैव टू डू समथिंग। India has to think, or government has to think how it can reduce the trade deficit with China. One way of looking at it is we take from China those items which we need as a primary, input for our industry. For example, pharmaceuticals. API हम लेके आते हैं वहां से, यहाँ से ड्रग्स बना के बाहर बेचते हैं। So this does not reflect the real, dependency to hai, but it does not reflect the real problem of, or rather it is not a problem because we are making money on whatever we are importing from China, but we are not making money on a lot of these small cheap mobiles and things like that which we keep buying, or other Chinese goods which we keep importing. That is something all of us as Indians have to, stop doing. So this is one thing which worries me. During COVID time, it had gone down a bit, but again, it's gone up. Okay, right. I want to put this chart. ये chart मेरे को मिला कहीं. A very interesting chart. ये देखिए, China's aging problem इसमें है. You just see how fast China population over 65 is going up. अभी 2020 में है, 25 तक कितना ऊपर बढ़ रहा है। ये तो एक रन रेट, हाई रन रेट ना, जो लास्ट ओवर्स में आता है, स्लॉग ओवर्स में जो रन रेट बढ़ जाता है किसी क्रिकेट टीम का, ऐसा लग रहा है ये। और आप आगे आगे जाके देखेंगे तो इसका प्रॉब्लम कितना होगा आप खुद समझ लीजिए। राइट, ओके, सो बट देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ दिस ऑलरेडी। इनका जो प्राइवेट पेंशन फंड है, it is likely that it will run out of funds by 2035. They'll not have money to pay in their private pension funds. क्यों? Because this private pension fund is funded by China's workforce. But when the workforce itself is shrinking because आबादी घट रहा है इनका, तो ये बुढ़ावस्था में जो जा रहे हैं उनको पैसा कौन देगा? So by 2035, and what's interesting is China is not refurbishing this fund. That's the thing. And China is now producing some, equities and annuities, life insurance type, or NPS type of a scheme. The problem with this NPS type of a scheme in China, where no one is prepared to spend and go into it. हमारे यहाँ तो NPS है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, कि आप पैसा डालते जाओ, गवर्नमेंट वो बॉन्ड, सिक्योरिटीज और शेयर्स में लगाती है, और आपको at the end of your service you can cash them. But in China, those bonds and all are gone down, so no one wants to invest. They're not sure if they'll get the money back if they put in that thing. And if it's a government backed annuity or a government backed fund, they definitely don't want to put the money. उनका खुद का लोग वो गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं. This is the fun. Okay, and the third bullet देखिए, I'll just read it out so that you understand. Meanwhile, as the population gets older,
The national birth rate continues to plumb record lows. It took France 115 years and Sweden 85 years to change into aging societies. In China, it has happened in 25 years. Just think, over last week, when I did last week or sometime back, spoke of democracy and all that. You see, by 2035, the National Health Commission expects that China will have 400 million over the age of 60. 400 million means it is more than one third the population. By 2035, their population would be somewhere around 1.2 billion only. By then, that would have reduced. और उसमें 400 million will be people who need pension like me. Just think where China is going. All we have to do, in my way of thinking, जहां तक मैं सोचता हूँ, is to hold China at bay. If we can hold China at bay, after 2035, it will become irrelevant. You will watch. I don't know whether I live till 2035, because that's about 8 years away. I'll be 75, 76 by then, right? But many of you will live and you'll see this. And I feel that China ka jo, big talk and all is another 4-5 years. By 2030, you will see China's graph going down drastically. Overall, it might still have a big military, it might still be a big economy, it might be blessing, but it'll be a problematic country because once the aging and demographic patterns change, social problems will start. भाई लोगों को अगर कम हो रहे हैं, जनता कम हो रही है, लोग बुढ़े हो रहे हैं, तो सोशल प्रॉब्लम्स तो शुरू होंगे, हेल्थ प्रॉब्लम शुरू होंगे, सब कुछ होंगे. अभी देखते जाइए. ये जो बदलाव है, व्हाट आई एम टॉकिंग, 3 years back no one spoke of it. Now people are speaking of it, people are discussing it. Just think 3 साल के बाद क्या होगा चाइना का हालत, right? So that's why I said you keep rejecting China and we will be where we have to be. We will grow where we have to grow. On that, no one can stop us. And why no one can stop us? How things are going to happen? We will see. Maybe tomorrow with